Okay, let's begin solving. This is February, March 2024, variant 32. I think I solved all the other 24 exams. This one was left. So let's just solve this. Let me also open up the marking scheme alongside so that I can check my answers. About it. Okay. पहला सवाल है polynomials का. तो ये whenever the question asks you to find out quotient and remainder तो उसमें long division करना ज़रूरी हो जाती है. Okay, so I will divide by x square plus 5. पहले मैं लिख देता हूँ x square, ये बनेगा x पावर 4 और उसके साथ आएगा प्लस 5x स्क्वायर. दोनों की साइंस चेंज हो जाएंगी और नीचे आ जाएगा -3x³ प्लस 4x स्क्वायर. फिर -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x³ आ जाएगा और -15x. ओके, -15x को भी तो आगे लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं. साइंस दोनों की चेंज हो जाएंगी. I get 4x squared plus 3x बन जाएगा. फिर प्लस 4 से करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 20. तो 3x और प्लस 7 आ जाएगा. That should be the remainder and that should be the quotient. Okay. Check if our answers are correct. X plus 7 and x squared minus 3x plus 7. Okay. Find the coefficient of x squared in the expansion of this. Okay, then आपस में multiply होंगे. This is a binomial that I will have to expand is 4b minus 1 minus x and n is half. तो मैं जो formula use करता हूँ a power n, so 4 power half. That gives me 2 n a n minus 1 and b power 1. So half 4 half minus 1 b power 1. तो बन जाएगा 1 minus 1 over 4x. And term number 3 is n minus 1 over 2 factorial n minus 2 divided. So half minus 1 over 2 factorial a power half minus 2 minus x power. Okay, so term number 3 आ जाएगी मेरे पास. I'll have to put this on a calculator. 0.5 into minus 0.5 divided by 2 into 4 power minus 3 upon 2. Given me minus 1 over 64. प्लस बनेगा शायद. बल्कि नहीं, माइनस बनेगा बिकॉज शुरू में देखेंगे. तो एक्सपेंशन बन गई 2x minus 5 के आगे 2 minus 1 over 4x minus 1 over 64x. I just want to find the term in x square. तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा.
minus 37 over 64x. I don't know if that's the correct answer. I know the calculation mistake will be minus 27 over 60. Minus 37 over 64. Okay, let's check. गलती कहाँ हुई है? कहीं कैलकुलेशन में ही हुई होगी. टर्म्स देख लेते हैं क्या आई हुई हैं. टर्म जो कहते हैं मुझे नज़र आ जाए. माइनस एक्स ओवर फोर. माइनस एक्स ओवर फोर तो सही है. माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 64. तो ये प्लस है सॉरी. चलिए ये गलती थी. एंड में कैलकुलेशन एरर था, बाकी सब सही था. स्टेट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स ऑलवेज द एक्सपेंशन. तो रेंज ऑफ वैलिडिटी का एक्सप्रेशन होता है ए प्लस माइनस बी एक्स पावर एन है. तो रेंज ऑफ वैलिडिटी बनती है मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए ओवर बी. इन दिस केस ए इज 4. बी को इग्नोर करते हैं साइन उसकी. सो 4 over 1 which is 4. The modulus of x is less than 4. Yes, इस तरह लिख सकते हैं between minus 4 and. Okay, so that's the correct answer. Then you have complex number का सवाल. It is given that z is equals to minus root 3 plus I x plus z square in the form r e iota theta. Where r is greater than 0 and theta is between minus pi and pi. So दो options हैं. Either I could go on and first calculate the modulus and argument of z, या फिर मैं डायरेक्ट पहले z स्क्वायर कर दूँ इसको. is basically iota minus root 3 whole square. So I think that's going to be the easier way out when I'm doing this question. कि मैं पहले जो है वो uh, 2 minus 2 root 3. So yes, so that's z square. अब इसका r या iota theta, so I want the modulus निकलेगा root of 2 square plus minus 2 root 3 square. Root of 16 is 4. And what quadrant is this in? Real यहाँ पे है, imaginary यहाँ पे है. The real is positive, imaginary is negative, so it's in the negative quadrant. पहले इसका alpha निकाल लेता हूँ. Alpha is tan inverse of b over a. So yeah, let me put my calculator in radians. So tan inverse of root 3. That gives me pi over 3. Okay, so argument बनेगा, argument of theta is minus pi over 3. So v in the form r iota theta is going to be 4p minus pi over 3i. Okay. So yeah, that's the correct answer. Yeah. So get the complex number w such that z square over w is real, and z square into w is real, and z square over w is some modulus to have 12 by. Find the two possible values of w, giving your answer in the form r e iota theta, where r greater than 0 and alpha is between minus pi or equals to pi. Okay. So when I say this, इसका मतलब ये होता है कि z square का मॉड्यूलस divided by w का मॉड्यूलस equals to 12. अब z square का जो मॉड्यूलस आया है वो 4 आया है, which means that w का जो मॉड्यूलस होना चाहिए वो होना चाहिए 1/3. Okay.
W का मॉडुलस होना चाहिए 1/3। तो R शुड बी 1/3। ये वाला R शुड बी 1/3। अब z स्क्वायर और w इंटू डब्ल्यू इज रियल। व्हेन आई से रियल, तो यानी वो सिर्फ इस रियल एक्सिस पे है, यानी उसका आर्ग्यूमेंट या तो थीटा है, या तो जीरो है, या एग्जैक्टली पाई है, या माइनस पाई भी हो सकता है, या पाई हो सकता है। सही है, एग्जैक्टली पाई हो सकता है, माइनस पाई नहीं हो सकता। अच्छा, अब उसमें टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू का हुआ है ना, तो एक सिचुएशन ये हो जाएगी कि इफ दिस इज रियल, then argument of w can either be 0 or pi। तो एक बन जाएगा 1/3 e पावर iota theta होता है ना, iota into 0, so that gives you 1/3, so w is 1/3। and the second option is that w could be e power minus pi I. I think these should be the correct values. It's telling me something different. Let me check. Oh, my bad. Sorry. Okay. So z square into w is real. Z square into w is real. That means that जब इनका आर्ग्यूमेंट निकाला जाता है, तो इसका रूल लगता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z स्क्वायर प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w। ओके, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z स्क्वायर ऊपर मेरे पास क्या आया हुआ है, -π/3 आया हुआ है। अब ये रियल है, तो रियल होने का क्या मतलब है कि या तो इस साइड पे है या इस साइड पे है, यानी इसका आर्ग्यूमेंट या तो जीरो है या पाई है। सही है, तो एक दफ़ा इसको ज़ीरो लगा के आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू निकाल लेते हैं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा मेरे पास π/3। या फिर एक दफ़ा इसको पाई लगा के इसका आर्ग्यूमेंट निकाल लेते हैं। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू बन रहा है 4π/3। मैं चेक। तो अच्छा, उन्होंने यहाँ पे -π/3 लिया हुआ है। ओके, सही है, दैट आई थिंक शुड बी द सेम। अच्छा, डब्ल्यू का आर्ग्यूमेंट जो है वो अल्फा है, एंड अल्फा कांट बी 4π/3। 4π/3 का जो एंगल होता है वो यहाँ पे आ जाता है। सो आई हैव सम रिस्ट्रिक्शन कि मैं पाई से एक्सीड नहीं कर सकता। तो व्हाट इज द काउंटर ऑफ दैट? द काउंटर ऑफ दैट इज कि मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ, एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी -2π/3। ओके, तो W इज गोइंग टू बी आइदर, उसका R तो क्लियर है 1/3 है, E एक पॉसिबिलिटी हो सकती है I π/3, और एक पॉसिबिलिटी वैसे हो सकती थी कि 4π/3 लिखूं, बट 4π/3 डजंट फिट इनटू दिस आर्ग्यूमेंट। ये हो जाएगा -2π/3 इसका आयोटा सी का। ओके, this is just to avoid awkward silences in the middle. Okay, the positive numbers P and Q are such that this, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई हैं, फिर मैंने ये पूछा है मुझे ये निकालना है, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि ये कैसे निकलेगा। कैन आई ब्रेक दिस अप एंड से दैट दिस इज ln p/7 प्लस ln q, तो 7 ln p प्लस ln q। ओके, तो मुझे ln p और ln q की वैल्यूज चाहिए होंगे। मैं पहला वाला जब ब्रेक करूंगा, तो ln p माइनस ln q इक्वल्स टू a, ln q स्क्वायर प्लस ln p इक्वल्स टू b, तो 2 ln q plus ln p equals to b। Can I solve these two equations simultaneously? ओके, मैं एलिमिनेशन मुझे नज़र आ रही है, इसलिए मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो -3 ln q इक्वल्स टू a माइनस b, ln q इक्वल्स टू a माइनस b ओवर 3 -3। तो ये तो क्लियर हो गया, a माइनस b ओवर -3 आ गया। और ln p, what I can do is I can fit in ln q यहाँ पे। Okay, this is going to become ln p plus a minus b over 3।
of LNP is going to be A minus A minus A, A minus A plus. LNP is 2A plus B over 2A plus 14A plus 7B over 3 minus A minus A. 14 minus A is 13A, 7B plus B is 8B. So this should be 13A plus 8B over 3. Is that the right answer? Yes, that is the right answer. Okay. Then this next question says that I should draw what? Say the region was going to present the complex numbers एक circle बनाना है and एक perpendicular bisector. Very awkward perpendicular bisector. I think ये 0 और 10 पे ही बनेगा. Let me just check. I want to be absolutely sure. Yes, 0 और 10 पे ही बनेगा. Okay, so your interpretation will not change. आप वही करेंगे जो ब्रैकेट में रखा है उसको ताकि इक्वल्स टू 0 करते हैं. तो वो पॉइंट आ जाता है जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होता है. Okay, I'll stick to the rules that I've taught you. So ये मैं ग्रिड वाली शीट एक खोल लेता हूँ and I'm going to do it on a grid because it's very time consuming to take a ruler on this. No report so far. No. Okay. पहले 4 and 2 and the radius is 3. So 4 and 2 is the center of the circle and the radius is 3. तो ये बन जाएगा ऐसा. ओके एंड सर्कल के अंदर होना चाहिए अभी शेड बट उसकी शेडिंग जो होगी वो दो चीज़ों की होनी है. तो अभी आई मूव टू रिमूव द शेडिंग दैट्स देयर. आई वांट टू फर्स्ट ड्रॉ द अदर वन. अच्छा ये किस किस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ये यहाँ पे 0 को कोऑर्डिनेट और यहाँ से कोऑर्डिनेट निकलेगा 10 जब भी मैंने आपको पहले दिखाया था कि 10 माइनस जी इक्वल्स टू 0 जी इक्वल्स टू 10 आंसर. सही है. तो यहाँ पे 10 मैं मार्क कर लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो आपने अपनी एक्सिस भी उस हिसाब से बनानी है. 0 और 10 का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो ऑब्वियसली 5 पे से बनेगा यूँ करके. ओके. अब कहाँ पे शेड होनी है. आई शुड बी away from 0 and closer to 10. That means that I should be here. Let's shade this part. Okay. So that's the Argand diagram for this. Here find the greatest value of z for argument of z in this region. Argument of z का मतलब है एंगल ड्रॉ करना है. तो इस रीजन में ग्रेटेस्ट एंगल क्या आ रहा होगा. ग्रेटेस्ट एंगल जो आ रहा होगा वो यहाँ से यूँ करके आ रहा होगा. So yeah, it has to pass through this, whatever this point is. Okay, that's the greatest argument of z that I have to find. I think it's a simple question for 2 marks that I have to check. वही 2 मार्क्स के लिए इसकी सबसे आसान मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूँ. आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैलकुलेट करना है. Okay, I have this distance which is 5. What is the radius of the circle? The radius of the circle is 3.
This point is 4 comma 2. That's root of 20. I'm just wondering if there is an easy way to calculate this. I know I can do it with trigonometry. I can find out this angle and I can also find out this angle. Let me check from the marking scheme if there's an easier way to answer this question. No, I think it's the longer way. They're using a lot of tan to do all of this. So I think I'll have to do it the long way as well. Okay, let's do this the long way then. Okay. Greatest argument of the यही वाला angle है जो मैंने mark किया हुआ है इसको find करना है. So yeah, so what I am going to do first is I am going to say that this entire angle needs to be broken up. ये मेरा center है. सही है. Center के coordinates थे 4 comma 2. So this was 4 and this was 2. Can I find out this angle theta first? Theta is going to be just tan inverse of 2 over 4. Okay, which is tan inverse of half. So I'm going to find tan inverse of half from my calculator. ओके. उसमें कौन सा अब एंगल ऐड करना है. एंगल जो ऐड करना है वो इतना और ऐड करना है. सो दिस इज द पॉइंट वेयर आई हैव टू फाइंड द एंगल. दिस लेंथ इज 5. ओके. दिस लेंथ कैन बी फाउंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. द रूट ऑफ 20 आ जाएगी मेरे पास. ओके, दैट एंगल इज कॉल्ड अल्फा. What other numbers do I have available? I think this chord has something to do with it. Okay. मैंने अभी तक रेडियस और उसको यूज नहीं किया है. 5. Do I know something else in this question? Let's check. P over over. But this is not 5. This is 3. Where is the 2 root 2 coming from? Have I missed something in this question?
a 2 mark question or it's taking you very long to solve. Let's see. Okay, I think I have the answer then. It took me a while to figure out, but that's how you would do it. So okay, why don't I start from the start and then explain this to you? The question is about finding out the greatest argument. So मैंने कौन सी लाइन का argument find करना है? यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन का argument find करना है. सही है? I'm going to draw this manually so that it doesn't mess up. Nice. Cool. That's banana. Okay. So this is the entire angle that I want to find in order to find out the uh, greatest argument. Okay. If I draw the now the center is always very crucial. तो मैंने center mark किया हुआ है 2,4 पे. आप इस angle को split कर दें. सही है. या आप इस angle को नहीं split नहीं भी करते तो मेरा objective ये है कि ये distance तो मुझे पता है 5 है. Okay, if I can somehow find this vertical distance तो मैं simple tan inverse लगा दूंगा. What is that going to be? अगर आप notice करें तो ये distance जो है वो 1 है and center से एक line draw करूंगा तो ये 3 की line draw होगी. Okay, so can I say that this vertical distance is going to be 3 square minus 1 square inside an under root? So that gives me root of 8. So if this is root of 8, if you notice this triangle, ये height 2 है. So what I can simply then say is tan inverse. What is the total height? 2 plus root 8. And what is the adjacent? That's 5. Okay. While it's showing P1. Oh, P2 वो सही आ रहा है.
Okay, so tough part. If you really ask me, it took me a while to sort of figure out what root two was in the marking scheme as well. Root of 8 कैसे आ रहा था? It takes a bit of trigonometry to do all of this. 2 marks के लिए इतना ज़्यादा टाइम ऐसे स्पेंड एग्जाम में नहीं करना चाहिए. I would expect you to skip over that question, go to the next one, think about it at the end if you have time. Okay, this is implicit differentiation. Let's start solving this quickly. So 4y dy by dx. फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. U equals to 3x, v equals to y, u dash is 3, v dash is 1 dy by dx plus 1 equals to 2x. So 4y dy by dx, u dash v plus v dash u. Yes, the heart of letting go, which I couldn't do because I was on a live stream. Else I would have skipped it, come back to it later on, and then something. But हो गया सॉल्व. तो P3 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. You have to pick your battles. Because मैंने पहले सॉल्व नहीं किया हुआ होता and just solving right in front of you, so sometimes the questions are tough. सही, ये तो आसान है, इम्प्रूव हो गया. Okay. Yeah. And so that the curve does not have a tangent parallel to the x-axis. Parallel to the x-axis का मतलब horizontal, यानी इसका gradient 0. So I have to prove to you that this gradient can never be 0. And there are no values of x and y for which dy by dx is 0. Now that can only be proved by sort of negating the idea कि भाई इसके roots या solutions आने वाले हैं. मैं ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाऊँ जहाँ solutions ना आ रहे हो तो मैं कहूँगा कि भाई there are no possible values of x and y. Okay, तो मैंने इसको 0 के इक्वेट किया. So I get 2x minus 3y minus 1 equals. So 3y equals to 2x minus. Okay. फिर 2y squared plus 3xy plus x equals to x squared. 2y squared. Substitution करेंगे. 2x minus 1 over 3 squared. 2x minus 1 over 3. So plus okay, when I do A, B, C from here, तो जब मैं इसको रखूंगा तो b square minus 4ac. अली कोशिश करते हैं.
if I make one, I couldn't pull out time for making an S1 at the last moment. हो गया था बट एक टाइम पे पीछे बना लेता हूँ तो मैं बताता हूँ तो ये आ रहा है no real roots. There are no values of x and y for which dy by dx equals to 6. Okay, that should be the answer, I think. Yep, that is what you have to conclude. यही solution होना है और ये solution होने से Question 7 पे आ जाते हैं. The diagram shows the curve this where x equals to alpha so that alpha satisfies the equation this. Minimum point है, so dy by dx करना पड़ेगा. It's a question on product rule, I think. U dash v plus v dash u. So yeah, minimum point है, so equals to 0, x की जगह alpha. Okay, 5 को इधर ले जाते हैं. E power 2 alpha को कॉमन ले लेते हैं. 1 plus 2 alpha बचा. 5 over 1 plus 2 alpha. E को रिवर्स करेंगे तो ln बन जाएगा. 2 alpha. So alpha equals to half ln. Okay. Verify by calculation that this alpha lies between. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले सबको एक साइड पे लाके एक फंक्शन बनाना पड़ता है. The function of alpha is alpha minus half of ln 5 over 1 plus 2 alpha. इसमें एक दफ़ा मैं 0.4 लगाऊंगा और एक दफ़ा 0.5 लगाऊंगा and I will show you a change of signs. Change of sign indicates root. Minus 0.118. 0.0419. Change of sign indicates root. Okay, use the iterative process to determine alpha correct to 2 decimal places. तो alpha 1 ले लेते हैं हम 0.45 और हम आइटरेशन करना स्टार्ट करते हैं. ओके, क्या है हमारा आइटरेटिव प्रोसेस, इसमें लिखना है 0.45 हाफ ln 5 over 1 plus 2 into answer. ln so every iteration has to be corrected 4 decimal places. So 0.4838 0.4663
0.4753 0.4707 and 0.4730. Okay, so alpha is 0.47. Okay. Yeah. Question number 8. Express a 3 sin x plus 2 root 2 cos x plus in the form this, where r is greater than 0 and alpha is between 0 and pi over 2. State the exact value of r and give alpha. तो पहले इसको expand करना पड़ेगा. Cos की आइडेंटिटी लगेगी कंपाउंड एंगल वाली cos x cos pi over 4 minus sin x sin pi over 4. Cos pi over 4 is root 2 over 2, so root 2 over 2 cos x, root 2 over 2 sin x. Okay, so we're expanding this bracket will give me 2 cos x minus 2 sin x. ये बन जाएगा sin x plus 2 cos x. और का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बनेगा. A and B are the coefficients of sin and cos. R comes out as root 5 and alpha बनता है tan inverse of B over A, so 2 over 1, tan inverse of 2 in radians. .107. Okay, so ये express हो गया, ये हो गया root 5 sin x plus 1.107. Okay, I hope that's the correct answer. Okay. Okay, then next वाला question कहता है 6 sin half theta how is this similar to the previous one. अगर आप notice करें तो coefficients multiply by 2 हो गए और x की जगह half theta आ गया. तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 2 root 5 sin पहले क्या था x, तो यहाँ पे लिख दूंगा half theta plus 1.107 equals to 3. अब ये भी 5 marks का है, which means that, and if you notice the range of -4 pi to 4 pi आ गई. सही है. If you talk about half theta की range, half theta is going to be -2 pi to 2 pi. Okay, which means one negative cycle and one positive cycle. I've always told you that it's best to first do the positive cycle and then see what the negative cycle is about. Okay. Then मैं quadrants mark कर लेता हूँ. This quadrant and that quadrant, that's where sign is positive. So sine inverse of 3 over 2 root 5. What is sine inverse of 3 over 2 root 5? 0.735. सही, एक एक्स्ट्रा डेसिमल ले लेती हूँ. Okay, 0.7353. तो क्वाड्रेंट 1 में आंसर आ रहा है. किसका आंसर आ रहा है? हाफ थीटा प्लस 1.107 का. और क्या आंसर आ रहा है? 0.7353 आ रहा है. क्वाड्रेंट 2 में आंसर आ रहा है. So that's one positive cycle. Once the positive cycle is out of the way, पहले मैं उसके आंसर्स निकाल लेता हूँ, देखता हूँ कितने आंसर्स आते हैं और फिर जो है मैं नेगेटिव साइकिल पर. ओके.
0.7353 minus 1.107 into 2. ये आंसर आ रहा है थीटा इक्वल्स टू माइनस 0.743. 743 seems like the correct answer. Okay. तो एक आंसर आ रहा है 2.5985 है, राउंड ऑफ होकर बन जाएगा 2.60. ओके. अब ये पॉजिटिव जो साइकिल था, जो यूं करके चलना था, उसके आंसर्स आ गए. एक साइकिल यूं करके भी चल रहा है, उसके आंसर निकालने के लिए अब आपको नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 और नेगेटिव क्वाड्रेंट 4, बिकॉज नेगेटिव साइकिल उल्टा चलता है. सही है. अब उसका शॉर्टकट क्या है कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग यू दैट आई टोल्ड यू दिस, कि इसका शॉर्टकट ये होता है कि अगर आपने पॉजिटिव साइकिल के आंसर्स निकाले हुए हैं तो उसमें से बस आप जो है वो 360 या इन दिस केस 2 पाई माइनस कर दें, तो आपके पास आंसर्स नेगेटिव साइकिल के खुद ही आ जाएंगे. सही है. तो नेगेटिव साइकिल के आंसर्स क्या आ रहे होंगे? हाफ थीटा प्लस 1.107 इक्वल्स टू 0.7353 माइनस 2 पाई. ओके. और हाफ थीटा प्लस 1.107 इक्वल्स टू पाई माइनस 0.7353 माइनस 2 पाई. ओके. अब देखते हैं इससे आंसर्स आते हैं या नहीं आते हैं. दैट्स व्हाट आई वांट टू फिगर आउट. हो सकता है अभी भी कोई आंसर मिसिंग आए, and we'll talk about that once it comes up. तो ये आंसर आ गया -13.3. ओके. और ये आ रहा है -9.97. ओके. थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे. अब व्हाट वाज माय रेंज? -4 पाई टू 4 पाई है. 4 पाई कितना होता है? 4 पाई इफ आई टेल यू इज 4.4 इंटू 3.142. तो ये बनता है -12.568 से 12.568. तो मेरा एक आंसर जो है वो आउटसाइड द रेंज जा रहा है, ये वाला आंसर डिस्कार्ड हो जाएगा. ओके. अब याद रखें कि जब कोई आंसर डिस्कार्ड होता है, दैट इज़ वेयर थिंग्स गेट लिटिल ट्रिकी कि भाई अब क्या करना चाहिए. अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका अगर एक नेगेटिव आंसर, छोटा आंसर डिस्कार्ड हुआ है, तो आप जो है वो उसको अगले साइकिल में लेके जाएं. अगले साइकिल में लेके जाने का मतलब क्या है कि आप क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 चला चुके हैं. अब आप क्वाड्रेंट 5 में जाएं. क्वाड्रेंट 5 में कैसे जाते हैं? क्वाड्रेंट 5 में जाने के लिए इसमें जो है वो 2 पाई ऐड करना पड़ता है. सही है. अब क्वाड्रेंट 5 में क्यों गया? क्योंकि एक नेगेटिव आंसर डिस्कार्ड हुआ. अगर कोई पॉजिटिव आंसर डिस्कार्ड होता तो मैं क्या करता? मैं पीछे वाले साइकिल में जाता. इन दिस केस आई वुड हैव गॉन इनटू नेगेटिव क्वाड्रेंट 5 then. सही है. बट दैट्स नॉट हैपनिंग हियर, सो आई कांट शो यू दैट, बट दैट इज द रूल दैट आई एम फॉलो. सही है. इसको कैलकुलेटर से करने का एक शॉर्टकट भी है, मैं रिव्यू क्लास में जो है वो करके आपको बता दूंगा. दिस आंसर इज कमिंग आउट एज 11.8. आई होप दैट्स द करेक्ट आंसर. तो मेरी करेक्ट आंसर्स की लिस्ट क्या बन गई है? मोस्ट नेगेटिव आंसर इज -9.97. देन आई हैव -0.743. then I have 2.60 and I have 11.8. Okay, those are the four answers that you should have. Does it say two decimal places? It doesn't say anywhere कि मुझे two decimal places पे देना चाहिए. So if something's rounding off, you do that. Okay. Question number 9 is vectors. So that OABC is a rectangle. Rectangle के लिए दो बातें प्रूव करना ज़रूरी होती हैं. एक तो ये कि परपेंडिकुलर निकलेंगे, तो OA and AB should be perpendicular and OC and BC should be perpendicular.
तो 90 डिग्रीज प्रूफ करना है और दूसरा ये कि डिस्टेंसेस बराबर प्रूफ होने चाहिए। सही है। तो पहले तो मैं ओ सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, दैट्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ओके, 49 प्लस 25 रूट ऑफ 74। ये किसके बराबर होना चाहिए? ए बी के बराबर होना चाहिए। ए बी मेरे पास नहीं है, सो आई एम गोइंग टू से ओ बी माइनस ओ। आई कैन ऑल्सो शो यू के वेक्टर्स बराबर आएंगे, तब भी सेम बात हो जाएगी। मैं उनको परपेंडिकुलर बाद में प्रूफ कर दूंगा। सही है। सो 8 माइनस 5 गिव्स मी 3, 2 माइनस 2 गिव्स मी 4 एंड 7 माइनस 6 माइनस 1 गिव्स मी -7। तो इसका भी मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा तो ये सेम ही आएगा, रूट ऑफ 7। इस तरह आप ओ ए का मैग्नीट्यूड निकाल लें। सही है। वी राइट डाउन 5 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, that gives you 25 and 5 is 30, रूट ऑफ 30। इसी तरह हम बी सी निकाल लेते हैं, सी बी निकाल लेते हैं। तो ओ बी माइनस ओ सी, 5 -4 is -2 and -6 minus -7 is plus. Okay, now how do I prove to you that perpendicular है? अभी if you've done that in one question it wouldn't matter, अगर सारे क्वेश्चन में किया है तो फिर कटेंगे once। तो ओ ए dot ए बी, let's see if our vectors are perpendicular। We need OA was 5 minus 2 and 7, 5 minus 2 and 1, 3 4 and -6। Dot product निकालेंगे 15 minus 8 plus 7 -7, that gives you 0, that proves perpendicular। Similarly CB और OC डॉट CB को भी प्रूफ कर लें डॉट प्रोडक्ट से। 5 minus 2 and 1 and 3 4 and -7, 15 minus 8 -7। Okay, so I proved that they are perpendicular and their distances are equal. So OABC is a rectangle. Okay, perpendicular शो करना था, मैंने distances से शो कर दिया है। Should write that in words, you can write that later on। Use a scalar product to find the acute angles between the diagonals OA and BC। सही। Diagonals of OA and BC। So cos theta, इन दोनों की डायरेक्शंस निकालने पड़ेंगी। द डायगोनल्स विल बी OB and AC। तो डायरेक्शनल वेक्टर्स निकाल लेते हैं। OB is given to you, I think, 8 2 and -6, और acute एंगल निकालना है। और BC निकाल लेते हैं। BC का एंगल होगा OC minus OB is going to be -5 2 and -1, -5 2 and -1। So cos theta equals to 8 2 -6 dot okay, so -40 plus 4 plus 6, 64 68 plus 36, 104 20। ओके, अभी जब मैं ये एंगल निकालूंगा तो ये शायद ऑब्ट्यूज आएगा बिकॉज माई न्यूमरेटर इज नेगेटिव। अगर मैं न्यूमरेटर को पॉजिटिव कर दूँ तो ये खुद ही एक्यूट हो जाएगा। अभी मैं निकाल भी लेता हूँ एंगल
बट अगर वो acute आ रहा हो obtuse आ रहा हो तो आप जो है उसको 180 में से माइनस कर दें, दैट शुड बी दैट। You mean I have it in radians, जिसको डिग्रीज में कर लेना चाहिए ताकि मुझे acute obtuse पर पता चले। Coming out as 122.5, तो 360 180 में से माइनस कर देंगे तो acute हो जाएगा 7.5। और कुछ गलत कर दिया। लेट्स सी क्या गलत किया हुआ है। ओ बी सी सब क्या है। आई थिंक मैंने जो है वो डायगनल का नाम वाला देख लिया। ए सी वॉज द डायगनल। Have I calculated AC or I have calculated BC? I calculated AC करना था। 3 minus 5 minus 2. Oh, this is wrong. So we'll have to do this again. 4 plus 2, 6. AC होना चाहिए, right? Yes, sure. 2 minus 8. Minus 2, 6, and minus 8. Minus 16 plus 12 plus 48. 2 square ये भी 104 ही बनेगा फिर। 44 ये 104। सही है, सही है। ओके, इसको क्रॉस इन्वर्स कर लेता हूँ। 64.97 that rounds up to 65. Okay, then we have partial fractions. Let's start solving this. This is a simple, this 3 linear factors. लेकिन ये सारे A में है, so it's probably going to bother me a little. So A over 2 plus x plus B over 2A minus x plus C over 5A minus 2x. And okay, now I will try doing a cover up method. cover up method में पहले x की वैल्यू a over 2 ले लेंगे, तो x equals to 2a ले लेंगे, सॉरी। ओके, x equals to 2a ले लेंगे,
36a square equals to a, ये 0 बन जाएगा, ये 5a माइनस 4a बन जाएगा, ये 4a बन जाएगा, ये 5a माइनस 4a a बन जाएगा, और ये भी 0 बन जाएगा, 4a इंटू 0। तो 36a स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर भी, तो b इज इक्वल्स टू 9। फिर अगली बार x की वैल्यू ले लेंगे, तो x equals to 5a, x equals to 5a divided by 2. Okay, so again 36a square, 5a divided by 2, 0, 5a divided by 2, 0, 5a divided by 2. So 36a square, 0 plus 0. And c is going to be 9a over 2 and minus a over 2. 36a square minus 9a square c over 4. So c is going to be minus 16. And for the third one, x is going to be equal to minus 2. I have solved this for someone earlier. Last वाला जो है वो 36a square equals to minus 2 है ना, x equals to minus 2 है, तो 2a plus 2a हो जाएगा, 5a plus 4a हो जाएगा, और ये वाला जो है वो 0 हो जाएगा, मैं इसको लिख नहीं रहा, और अगला वाला भी 0 हो जाएगा, तो 9 into 4 36 a square बन जाएंगे. A is going to be equals to 1. Let's first verify if those are the correct answers. 1, 9, and minus 16. Yeah. Okay. So 1 over 2a plus x plus 9 over 5a, 2a minus x plus minus 16 over 5a minus 2. Okay. So integrate करना है, let's integrate. So ln 2a plus x divided by 1, ln 2a minus x divided by minus 1, ln 5a minus 2x divided by minus 2. So ln 3a, a, 3, ln a minus 9 ln 3a, eight ln 7a. Okay, so ln 3a, p ln q plus r ln s, where p and a are integers and q and s are prime numbers. It's very
odd sort of requirement, but try to do this. Okay, so what are the terms with 3a? So 8 plus 9 is 17, 17 plus 1 is 18. And minus 10 ln a and minus 8 ln 7a. Okay. Ln 3a power 18 and ln a power 10, sorry, a power 10 in the denominator. I'm applying rules for logarithms. And 7a power 8. Okay. So I think a power 18 and a power 18, 3 power 18, a power 18, and that's 7 power 8 and a power 18. So a power 18 and a power 18 get cancelled out. So I'm getting ln 3 power 18 divided by 7 power 8. I think I should be able to get an answer out of this. P and R are integers and Q and S are prime numbers. Yeah, I think I have my prime numbers. This is going to become ln 3 power 18 minus ln 7 power 8. That's 18 ln 3 minus 8 ln 7. Yeah, that's the correct answer. Okay. This question number 11, hopefully the last question on the exam. Solve the differential equation and find the exact value. Okay. So 1 plus y will stay here. E power 3y will come here. And I have 1 plus cos 2 theta. The denominator with d theta here. But whenever you have 1, I have told you this before, that you use the identity to cos square theta minus 1 so that you can get rid of the 1. This gives me 1 over 2 cos square theta. That's sec square theta with a half outside. Okay, and d theta here. This is going to be an integration by parts, I think. When you integrate both sides, this is simple. This becomes half tan theta plus c. And that's integration by parts. So I write isolate, algebra, and exponential. And v dash is e power minus 3y. So v is e power over minus 3. vu minus integration of vu dash. vu vu dash. So e power minus 3y over 3 plus e power minus 3y over 3. I think I've included an extra minus something. That's going to stay. So minus e power minus 3y over 3
plus e power minus 3y over minus 9. And I have half tan theta plus c. What does it say? It says y is 0 and theta equals to pi over 4. And then find tan theta when y equals to 1. Theta equals to pi over 4 and y equals to 0. So when y equals to 0, I get minus e power 0 over 3 minus e power 0 over 9. Tan pi over 4 is 1. That makes it easy. Half plus c minus 1 over 3 minus 1 over 3. Minus 17 over 18. I want to check if that c is correct first. 17 over 18 is what I'm getting. Okay, so writing my expression again. I want to find the exact value of tan theta when y equals to 1. That's going to give me minus e power minus 3 over 3 minus e power minus 3 over 9 equals to half tan theta, and c is minus 17 over 18. Okay, let's move the powers. E power 3 minus e power 3. Okay, to be honest, I can just do tan theta and cross multiply the two. I think this should work without having to simplify anything. This simplified the 17 over 9 and this simplified this part. I could also simplify this if you want. So that's minus 2 over 3 minus 2 over 9. But I think Martinson will let me just keep it that way as well. I don't know if that's correct. 14 over 9. Getting minus 8 over 9. Minus 14 over 9. Have I made a mistake? I think where I made a mistake is writing Jude. Oh, that's a long mistake then. It didn't matter because y was 1, then y was 1, so this gives me 2. There's a 2 here, there's a 4 here. Okay, now my answer is correct. Everything else was correct. Didn't make algebraic errors, so should be careful about this. This honestly was a difficult exam. I don't know what the threshold was, but I don't expect it to be right. Okay, thank you for watching.